Hi, welcome all of you, and today I'm starting the first lecture on thermodynamics, and this is the series 1000 plus good question series on basically gate questions of mechanical engineering. And thermodynamics में मैंने चूज किया है बेसिक thermodynamics के कुछ टॉपिक्स, and in this particular topic basics ideal gas equation के बारे में बात करेंगे, एंड पीवी टीएस डायग्राम, पीवी से टीएस डायग्राम, टीएस डायग्राम से पीवी डायग्राम, ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं उनका कंसेप्ट क्या है और पीडीवी वर्क हम किस तरीके से निकालेंगे। तो मैंने ये कुछ क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन चूज किए हैं जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, और उनके थ्रू हम कंसेप्ट्स को वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स थ्रू दीज क्वेश्चंस। तो इन 10 क्वेश्चंस को करने की ट्राई करते हैं। लेट अस गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो सॉरी, रीड द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। उसने आपको दो डायग्राम्स दे रखा है, एक पीवी डायग्राम दे रखा है और एक टीएस डायग्राम दे रखा है, और इन दोनों डायग्राम्स पे ही हैज गिवन यू ए बी सी डी 4 प्रोसेसेस, एंड ही इज आस्किंग यू कि इन चारों प्रोसेसेस में कौन सी आइसोकोरिक है, कौन सी आइसोबैरिक है, कौन सी आइसोथर्मल है, कौन सी रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो दैट इज व्हाट ही हैज आस्क्ड यू। अब ये आंसर चॉइसेस दे रखी हैं, ये 4 प्रोसेसेस, एंड आपको ये बतानी है ए बी सी डी कौन सी प्रोसेसेस हैं। सो दैट इज द क्वेश्चन गिवन टू अस। नाउ ये क्वेश्चन बेसिकली हमारा है कि पीवी से टीएस डायग्राम, टीएस डायग्राम से पीवी डायग्राम कैसे हम बनाएं, एंड पीवी डायग्राम के ऊपर टी एंड एस प्रोसेसेस कैसे प्लॉट करें, और टीएस डायग्राम के ऊपर कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम डायग्राम कैसे प्लॉट करें। देखो, पीवी डायग्राम के ऊपर वो कभी भी आपसे आइसोबैरिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेस नहीं पूछेगा। व्हाट इज आइसोकोरिक प्रोसेस? कांस्टेंट वॉल्यूम। आइसोबैरिक कांस्टेंट प्रेशर, आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर, रिवर्सिबल एडियाबैटिक उसको आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं, राइट। तो वो कभी भी आपसे पीवी डायग्राम पे आइसोबैरिक आइसोकोरिक नहीं पूछेगा, टीएस डायग्राम पे आइसोथर्मल आइसोथर्मल एंड आइसेंट्रोपिक नहीं पूछेगा। दैट मींस ए और बी में से एक आइसोथर्मल है, एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, और सी एंड डी में से एक आइसोकोरिक है, एक आइसोबैरिक है। तो हमें आइडेंटिफाई करनी है कि विच प्रोसेस इज वेयर, एंड दिस कंसेप्ट इज बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट। इसमें क्या है कि पीवी डायग्राम के ऊपर और टीएस डायग्राम के ऊपर हम प्रोसेसेस को कैसे प्लॉट करें। सो लेट अस सी द कंसेप्ट है क्या, एंड लेट मी एक्सप्लेन यू दैट कंसेप्ट ऑल्सो। आई विल एक्सप्लेन यू। आपको पीवी डायग्राम के ऊपर जितनी भी प्रोसेसेस हैं उन प्रोसेसेस की स्लोप से आपको आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी प्रोसेस वो है। अब पीवी डायग्राम के ऊपर अगर मैं स्लोप की बात करूं फॉर आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, तो आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की स्लोप है माइनस पी ओवर वी एंड माइनस गामा पी ओवर वी, एंड गामा इज मोर देन 1, सीपी बाई सीवी इज कॉल्ड गामा। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक की स्लोप इज मोर देन आइसोथर्मल की स्लोप। सो लेट मी नाउ एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट हियर टू यू। Let me explain this. Any process can be written as PV raised to power n is equal to constant. Any reversible process is written like this. Now, depending upon the value of n, you get different processes here. For example, अगर मैं n की वैल्यू को 0 ले लूं तो मेरे पास P is equal to constant process आ जाएगी, which is isobaric process. Similarly, अगर मैं n की वैल्यू को 1 ले लूं तो PV is equal to constant आ जाएगा. PV is equal to constant is also T is equal to constant process, isothermal process. Similarly, अगर मैं n की वैल्यू को गामा ले लूं तो PV raised to power gamma is equal to constant आ जाएगा, जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है. सिमिलरली अगर मैं n की वैल्यू को मैं इन्फिनिटी को अप्रोच कर दूं तो ये V is equal to constant प्रोसेस आएगी. That means डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स n 0 है, 1 है, क्या है, मेरे पास अलग अलग प्रोसेसेस आ जाएंगी. नाउ हाउ डू आई फाइंड द स्लोप ऑफ एनी प्रोसेस ऑन पीवी डायग्राम. अगर मैं आपको एक्स वाई डायग्राम दूं तो एक्स वाई डायग्राम के ऊपर स्लोप कैसे निकालते हैं? dy बाई डी एक्स. सिमिलरली अगर मैं आपको नाउ यहां पे पीवी डायग्राम अगर दे दूं तो पीवी डायग्राम पे स्लोप कैसे निकालते हैं? dp बाई dv इज द स्लोप. एंड अगर मैं टीएस डायग्राम आपको दे दूं तो स्लोप कैसे निकालते हैं? dt बाई ds इज द स्लोप. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट in PV and TS diagram is how to find out slope of any process on PV diagram and how to find out slope of any process on TS diagram. तो PV डायग्राम के ऊपर स्लोप कैसे निकालेंगे हम? dp by dv, एंड TS डायग्राम पे कैसे निकालेंगे? dt by ds. That is the only thing we have to basically find out. Now, how to find out slope of any process on PV diagram? और उस स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं? लेट्स टेक लॉग ऑन बोथ साइड. लॉग ऑफ P
प्लस एन लॉग ऑफ v इज इक्वल टू लॉग ऑफ c। अब डिफरेंशिएट करो, dp बाई p प्लस n टाइम्स dv बाई v इज इक्वल टू 0। So dp by dv comes out to be minus np over v, minus np over v. So slope of any process on PV diagram is nothing but minus npv over v. Now what is the value of n for isothermal process? 1. And what is the value of n for reversible adiabatic process? Gamma. So the slope of dp by dv, slope of isothermal process is minus p over v, and slope of reversible adiabatic process is minus gamma over p. तो slope किसकी ज्यादा है? Reversible adiabatic की. तो what is the slope of PV diagram? Minus np over v. So which process has more slope? Reversible adiabatic process has more slope than आइसोथर्मल प्रोसेस, एंड दैट इज द कंसेप्ट। पीवी डायग्राम के ऊपर कौन सी प्रोसेस वो आपको बोलेगा? आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एडियाबैटिक। किसकी स्लोप ज्यादा है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक की। व्हाई? बिकॉज दैट इज गामा इज मोर देन 1। नेगेटिव स्लोप है बट ज्यादा है, दैट इज मैग्नीट्यूड इज मोर दो इट इज नेगेटिव। एज फार एज द टीएस डायग्राम इज कंसर्न्ड, नाउ you know there is a second law which says dq which is equal to mc dt which is equal to mc dt, that is बेसिकली हमारे पास एक हीट इंटरेक्शन का फॉर्मूला है dq is equal to mc dt, एंड हम यहाँ पे जो हमारे पास TDS रिलेशन है दैट इज dq is equal to TDS, दैट इज अ सेकंड लॉ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। यहां से फॉर स्लोप ऑन TS डायग्राम विच इज dt over ds, that comes out to be dt by ds is t over c, स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी mc, अगर m पर यूनिट में m ले लूं तो t over c। Now for isobaric process this is t over cp, and for isochoric process this comes out to be t over cv। Now cp is more than cv, and hence slope of isobaric process is, because cp is more than cv, so slope of isobaric process is less than slope of isochoric process on TS diagram. So this is the actual concept to be used in this particular processes. So which process has more slope on TS diagram? Isochoric. Which process has more slope on PV diagram? Reversible adiabatic. So let's go back and try to understand what we have basically written, what we have understood in this particular case now. सो पीवी डायग्राम के ऊपर वो कौन सी दो प्रोसेसेस आपको पूछेगा? सर पीवी डायग्राम के ऊपर ही विल आस्क अस आइसोथर्मल प्रोसेस एंड रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। पीवी डायग्राम टीएस डायग्राम के ऊपर कौन सी प्रोसेसेस पूछेगा? आइसोकोरिक प्रोसेस एंड आइसोबैरिक प्रोसेस। विच प्रोसेस हैज मोर स्लोप ऑन टीएस डायग्राम? आइसोकोरिक प्रोसेस। एंड ये आपकी जो लाइन है इसकी स्लोप इज मोर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप? खड़ी लाइन, द स्टीप लाइन, द लाइन विच इज टुवर्ड्स वाई एक्सिस हैज मोर स्लोप देन द लाइन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस की स्लोप कम है, आइसोकोरिक की स्लोप ज्यादा है। सिमिलरली पीवी डायग्राम के ऊपर किसकी स्लोप ज्यादा है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक की स्लोप इज मोर देन आइसोथर्मल प्रोसेस, एंड हेंस रिवर्सिबल एडियाबैटिक की स्लोप इज मोर देन आइसोथर्मल, तो इसकी स्लोप आपको वो वर्टिकल लाइन की तरफ दिखेगी। सो दिस इज द प्रोसेस जो उसने दे रखी है, दैट इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक, दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। एंड लेट्स गो बैक नाउ टू द क्वेश्चन एंड सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। सो व्हेन वी गो टू द क्वेश्चन, हमारे पास ये दो प्रोसेसेस थी। अब इसमें बताओ स्लोप किसकी ज्यादा है? नंबर वन, पीवी डायग्राम के ऊपर ना तो ये आइसोबैरिक है ना ये आइसोकोरिक है, तो ए और बी में से एक आइसोथर्मल है, एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, यहां से एक आइसोकोरिक है, एक आइसोबैरिक है। सो कैन यू टेल मी नाउ ए एंड बी में से स्लोप ज्यादा किसकी है? कौन सी लाइन वर्टिकल की तरफ है? सर बी लाइन इज वर्टिकल की तरफ है, ए लाइन हॉरिजॉन्टल की तरफ है। ये लाइन वर्टिकल की तरफ है, डी लाइन की स्लोप ज्यादा है, सी लाइन की स्लोप कम है। सो रिवर्सिबल एडियाबैटिक की स्लोप ज्यादा होती है, राइट? सो बी की स्लोप इज मोर देन स्लोप ऑफ ए। सो रिवर्सिबल एडियाबैटिक कौन सा हुआ? बी। B is a reversible adiabatic process. So what answer is? Reversible adiabatic is 4. So 4 should go with B. 4 should go with B. So answer for this is directly we can find out. Answer is B for that. Clear? That is how you have to understand. And now similarly C और D में से एक आइसोकोरिक है। कौन सी आइसोकोरिक है? जिसकी स्लोप ज्यादा है। कौन सी की स्लोप ज्यादा है? जो वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन कौन लग रही है? D is looking like vertical line and hence slope of that is more. So D is isocoric and C is isobaric process. एरो किसी भी तरफ हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इट इज एक्सपेंशन और कंप्रेशन, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। यहां पे मैंने एक्सपेंशन प्रोसेसेस शो कर रखी हैं, यहां पे भी एक्सपेंशन प्रोसेसेस हैं, दिस इज बेसिकली हीट एडिशन प्रोसेसेस, so this is how this all is shown. Fine, I hope this concept is clear to us. Let's go for now this question. Read this question carefully. उसने आपको एक पीवी डायग्राम दे रखा है और वो पूछता है कि पीवी से टीएस डायग्राम प्लॉट करो। पीवी डायग्राम से टीएस डायग्राम प्लॉट करो। नाउ हाउ शैल वी डू दैट?
ओके, बता सकते हैं कौन सा आंसर हिट करेंगे? नाउ 1 to 2 process, let us see what is 1 to 2 process. 1 to 2 process is isothermal. इन चारों में बताओ आइसोथर्मल 1 to 2 किसमें है? 1 to 2, 1 to 2, 1 to 2 सब में आइसोथर्मल दे रखा है, राइट? सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड वी गो टुवर्ड्स 2 आइसोथर्मल प्रोसेस. 2 to 3 is isocoric. अब 2 to 3 is isocoric and 3 to 4 is isobaric. और हमने अभी इस तरीके से प्लॉट किया था, ये आइसोकोरिक है, ये आइसोबैरिक है. टीएस डायग्राम पे आइसोकोरिक की स्लोप इज मोर. अब 2 से चलते हैं. तो देखो जब मैं 1 to 2 गया तो मैं 1 to 2 में मैंने क्या किया, 1 to 2 में मैं एक आइसोथर्मल प्रोसेस ली. लेकिन मेरे को ये बताओ 1 to 2 प्रोसेस कैसी प्रोसेस होनी चाहिए टीएस डायग्राम पे? सर 1 to 2 हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए. 1 to 2 इज आइसोथर्मल प्रोसेस, बट दिस इज टुवर्ड्स दिस साइड और इस साइड. कैसे पता लगेगा 1 to 2 ऐसा है, ये 1 to 2 ऐसा है? हाउ डू वी नो दैट? टेल मी, हाउ डू वी नो कि 1 to 2 इस तरफ होगा या इस तरफ को जाएगा? How do we know that? Answer is, now let's try to understand this. 1 to 2 क्या प्रोसेस है? एक्सपेंशन है या कंप्रेशन है? ये तो एक्सपेंशन प्रोसेस है. लेट मी गो टू फर्स्ट लॉ नाउ. व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ इज dq is equal to delta w, delta u सॉरी, प्लस dw. अब क्योंकि एक्सपेंशन प्रोसेस है तो डेल्टा w इज पॉजिटिव. 1 to 2 इज एक्सपेंशन प्रोसेस, तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, पॉजिटिव है ये. और क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल में du चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, इसलिए dq विल बी पॉजिटिव. इफ dw इज पॉजिटिव dq विल आल्सो बी पॉजिटिव. dq पॉजिटिव मींस हीट इज एडेड. इफ हीट इज एडेड dq और क्या होता है? dq इज इक्वल टू tds. एंड इफ हीट इज एडेड एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंट्रोपी इज गोइंग टू इंक्रीज. अब मेरे को बताओ 1 to 2 इस तरफ होगा या 1 to 2 इस तरफ होगा? तो एंट्रोपी बढ़ेगी, मतलब एंट्रोपी विल इंक्रीज. अगेन लिसन केयरफुली. We know 1 to 2 is isothermal process, but I don't know whether it is 1 to 2 this side or this side. Isothermal on TS will be horizontal. Now, first law ये बोलता है dW is positive because it is expansion process. Arrow देखो. So, if it is expansion, it is positive. And because process is isothermal, du is zero. If du is zero, this is positive. dq is also positive. dq is positive. TDS में ds is also positive. So, 1 to 2 will be this side. तो ये गलत है. This is wrong. This is also wrong. Now only these two options are left. Now let's go from 2 to 3. 2 to 3. 2 to 3 is now isocoric process. Isocoric process. Now isocoric process 2 to 3 में volume is constant but temperature pressure is increasing. Now let us go for another ideal gas equation. P2 V2 by T2 is equal to P3 V3 by T3. What is this equation? Ideal gas equation. P is equal to MRT. So any two states 2 and 3 पे this equation will be true. Now V2 is equal to V3. Let's cancel it. Now P3 is more than P2. As is clear, P3 is more than P2. So T3 will also be more than T2. T3 will be more than T2. So let us now see these two choices now. When I go from 2 to 3, 2 to 3 में यहां पे 3 is less and at this point 3 is more, and that is the reason I'll choose this one. This is wrong and this is the answer for me. तो यहां से तुम्हें पता लग गया which is the answer. So this is how you have to proceed. So PV से TS डायग्राम, TS से PV डायग्राम के आंसर अगर लगाने हैं, you should be very clear about the slope of isocoric isobaric process on TS diagram and slope of isothermal and reversible adiabatic process on PV diagram. Plus, you should know about ideal gas equation to compare the states. How you have to compare the states. And moreover, this 2 to 3 is now isocoric process और उसकी slope 3 to 1 से ज्यादा होगा. And that is how your this cycle will be complete. And again, one thing you keep in mind, if PV diagram is counterclockwise, TS diagram will also be counterclockwise. This is clockwise, this is wrong, this is clockwise, this is wrong, this is clockwise, this is wrong, this is counterclockwise. तो अगर तुम वैसे भी देख लेते तो आपको पता लग जाता कि ये clockwise है, ये clockwise है, ये clockwise है, ये तीनों choices गलत हैं. Only anti-clockwise, because this 1 2 3 is anti-clockwise, this will also be anti-clockwise. That is also you could have understood from here. Fine. So see this answer, I think something you will get from here and आपको पता लग जाएगा how it is to be done. Okay, let's go for next question now. Whether you can answer this question.
आपको एक पीवी डायग्राम पे रेक्टेंगल दिया है, आपको टीएस डायग्राम उसका प्लॉट करना है. सो you need to make this as diagram. Let's see what kind of diagram do we get. Let's use our concepts now. Tell me now, let's start with state number 1. State 1 is isocoric process. तो टीएस डायग्राम के ऊपर द कंसेप्ट वी हैव हर्ड लर्न इज दिस. टीएस डायग्राम के ऊपर दीज आर द प्रोसेसेस. This is isocoric, isobaric, this is isobaric, this is isocoric. So this is the state. Either you can go on heat addition side or you can go on heat rejection side. This is the heat addition, this side is heat rejection. There is a meaning of it. So now let's see 1 to 2. अगर मैं 1 to 2 में गया तो P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. Now V2 is equal to V1, V2 is equal to V1, तो क्या हो गया? P2 is less than P1, hence T2 will be less than T1. And because it is isocoric process from 1 to 2, isocoric process को हम कैसे प्लॉट करते हैं? This is the heat addition और heat rejection process. कौन सी प्रोसेस है? 1 to 2 is heat addition और heat rejection. वो पता लगेगा आपका यहां से. यहाँ पे टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, दैट मींस हीट रिजेक्शन. टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, सो 1 to 2 टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग. आइसोकोरिक प्रोसेस, इट विल बी ड्रॉन समथिंग लाइक दिस. तो 1 to 2 विल बी समथिंग लाइक दिस. ओके, दिस लुक्स लाइक ओके. 1 to 2 दिस इज रॉन्ग. 1 to 2 दिस इज रॉन्ग. 1 to 2 दिस इज रॉन्ग. तो आपको इसी कंसेप्ट से पता लग गया कि 1 to 2 क्योंकि नीचे की तरफ आएगी, hence answer is this. You know, GATE exam is a aptitude test. This is a engineering aptitude. तो आपको क्वेश्चन में कोई ना कोई ऐसा कंसेप्ट पड़ा होगा जिस कंसेप्ट के बेस पे एंटायर क्वेश्चन यू कैन हैंडल. यू नीड टू सी दैट. सो 1 to 2 आपको पता लग गया. देखो 1 to 2 में हीट एडिशन, T2 इज लुकिंग लाइक मोर देन T1, T2 इज मोर देन T1, T2 इज मोर देन T1. इट इज नॉट देयर. सो T2 विल बी लेस देन T1 and hence this is going to be the answer. After that, obviously, you go 2 to 3. 2 to 3 is isobaric process. Again, we can say P2 V2 by T2 is equal to P3 V3 by T3. Now, P2 is equal to P3 as per this. So, if now see here, V3 is more than V2. If V3 is more than V2, T3 should be also more than T2. So, T3 is more than T2. And keep moving this way, you will find the answer for this. So, answer for this is B. Right? So also you can see answer here, but I've already explained you what is the meaning of this. Okay, let's read this question. There are 3 gases A, B, C. उसने 3 गैस दे रखी हैं और हमने उनको रिवर्सिबल एडिबैटिक एक्सपेंशन किया. What do you understand by रिवर्सिबल एडिबैटिक एक्सपेंशन? रिवर्सिबल एडिबैटिक में प्रोसेस क्या होती है? PV raised to power gamma is equal to constant. Specific heat at constant volume for each gas is given. अगर मैं A, B, C गैस की बात करूं, CV is given 2R, 3R, 4R. ये हमारे पास दे रखा है. R इज कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट. तो आपको आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी गैस कहां पे है. 1 to 2 विच प्रोसेस इज 1 2 3. आई मीन कौन सी आपकी 1 2 3 प्रोसेसेस कौन सी गैस के लिए है. ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू हियर वन थिंग. Cp minus Cv is R and Cp over Cv is gamma. You understand? सो अगर मेरे पास ये Cp दिया है, Cv दिया है, तो Cp कैसे मिलेगा? दिस इज 3R, दिस इज 4R, दिस इज 5R. अंडरस्टैंड? नाउ व्हाट विल बी गामा फॉर दिस? 3 by 2 1.5. गामा इज Cp by Cv. Cp by Cv. तो A के लिए गामा आ गया 1.5, B के लिए गामा आ गया 4 by 3, दैट मींस 1.33, एंड ये आ गया हमारे पास 1 point and this is 125 गामा की वैल्यू. राइट? तो गामा फॉर A is nothing but gamma for A is 1.5, gamma for B is 1.33 and gamma for C is 1.25. So CV is given to us and CV से CP निकल जाएगा और CV and CP से gamma निकल जाएगा. तो हमें तीनों गैसेस के लिए we came to know what is gamma. Now I told you just now what is the slope of PV diagram for reversible adiabatic process. Slope of PV diagram for reversible adiabatic process is equal to minus gamma P over V. अब जिसका गामा ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा. जिस गैस का गामा ज्यादा होगा उसकी स्लोप ज्यादा होगी. गामा ज्यादा किसका है? ए का. तो ए की स्लोप सबसे ज्यादा होगी. अब बता सकते हैं सबसे ज्यादा स्लोप कौन सी लाइन की है? जो वर्टिकल की तरफ है. तो आई थिंक 3 is towards the vertical.
तो 3 की स्लोप मैक्सिमम है, 3 इज ए, बी उसके बीच में रहेगा और ये सी रहेगा। तो सी ए basically C is 1, B is 2, A is 3. So I will go with answer, that is answer is B. Have you understood this? तो हमें A B C का गामा की वैल्यू निकालना था और गामा की वैल्यू निकल गया तो हमें स्लोप पता चल जाएगा और स्लोप से हम बता सकते हैं कौन सी गैस है। तो अगेन दिस वाज द कंसेप्ट बेस्ड अपॉन के पीवी डायग्राम पे हम स्लोप कैसे निकालेंगे, पीवी डायग्राम पे अलग अलग प्रोसेसेस को कैसे हमने कैलकुलेट करना है और गामा के साथ कैसे स्लोप चेंज होती है। तो हर गैस का गामा की वैल्यू अलग होती है, जैसे मोनोटॉमिक गैस के गामा की वैल्यू, डायटोमिक गैस की गामा की वैल्यू। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, that is what is given. So for A 1.5, for B 1.3, for C 1.25, that is how we calculate it here. Okay, let's go for next question now. Ideal gas equation is given as PV is equal to RT. R is universal gas constant. तो बताओ इसमें V क्या है? Would you like to answer this question? What is the value of V? ओके, लेट मी टेल यू, आइडियल गैस इक्वेशन को दो तीन तरीके से लिखते हैं। पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, पी स्मॉल वी इज इक्वल टू आर टी, पी इज इक्वल टू रो आर टी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वी बार इज इक्वल टू आर टी। ये कुछ वेज हैं जिसमें मैं आइडियल गैस इक्वेशन को लिखता हूं। नाउ this is the volume of the container or gas, this is the mass of the gas, this is characteristic gas constant, this is universal gas constant, this is universal gas constant, and you know this n is the number of moles, this is number of moles, number of moles, and this m is mass of the gas. number of mole होता है mass of gas over molecular mass of the gas, mass of gas over molecular mass of the gas. So this is the concept of ideal gas equation. Remember ideal gas equation in these forms. P is the pressure, T is the temperature in absolute terms, Kelvin and Pascal. V is the volume of the gas, R is characteristic gas constant, R bar is the universal gas constant, M is the mass of the gas, small v is the specific volume. Specific volume is volume per unit mass. And this rho is the density, and rho is 1 by specific volume, and that is nothing but mass per unit volume, that is the density of the gas, right? And this n is number of mole. And now from this equation you clearly see PV is equal to nRT, and if this R is universal gas constant, this V is V over N. So what is V bar? V over N, and this is called volume of the gas per mole और मोलर वॉल्यूम। तो इफ दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर या आर बार तो हम लोग लगाते हैं, but this is given in the question is r bar only, that is universal gas constant. So if this is universal gas constant, this V becomes molar volume. So this V is the molar volume which is given to us, that is the answer for this is D. So remember the ideal gas equation in different formats, in terms of number of moles, in terms of characteristic gas constant. So this question was based upon that concept. Okay, now see this question is also interesting question. There is a piston cylinder mechanism, और आपको गेज प्रेशर मींस अवर देन एटमॉस्फेयर प्रेशर 2 बार एंड 1 बार दे रखा है। यहां पे 2 बार प्रेशर है, यहां पे 1 बार प्रेशर है। पिस्टन के एक तरफ 2 बार प्रेशर, एक तरफ 1 बार प्रेशर, एंड पिस्टन स्लोली मूव करता है 10 सेंटीमीटर। तो आपको यह बताना है कि डिस्प्लेसमेंट वर्क पीडीवी वर्क कितना होगा इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पिस्टन इज 0.5 मीटर स्क्वायर। So how to find out now? You see, if pressure here is 2 bar, pressure here is 1 bar, तो पिस्टन के ऊपर नेट प्रेशर फोर्स जो लगा डेल्टा पी, that is 2 minus 1, that is 1 bar, एंड यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दे रखा है, राइट? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दे रखा है, और पिस्टन कितना मूव किया दैट डिस्टेंस इज ऑल्सो गिवन टू अस। तो कैन वी फाइंड आउट व्हाट इज पीडीवी वर्क, हाउ मच इज द प्रेशर एक्टिंग, नेट pressure acting on the piston into the displacement. What is the answer, do you think? What do you think is the answer? And you know what is the meaning of gauge pressure? Gauge pressure simply means pressure above than atmospheric pressure. तो absolute reference पे अगर मैं खड़ा हो जाऊं, ये है atmospheric reference. This is atmospheric pressure.
तो हमारे पास एक तरफ दे रखा है 1 बार गेज एक बार, और एक तरफ दे रखा है 2 बार गेज। तो डेल्टा पी कितना आ गया 1 बार। तो एक साइड दे रखा है प्रेशर 2 बार गेज मींस अबव एटमॉस्फेयर। एब्सोल्यूट टर्म में 2 बार गेज कितना हो जाएगा, एब्सोल्यूट टर्म में 3 बार, और यहां पे कितना हो जाएगा 2 बार। तो एब्सोल्यूट प्रेशर हमारे पास 3 बार एंड 2 बार दे रखा है, या गेज प्रेशर हमारे पास 2 बार एंड 1 बार दे रखा है। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा 1 बार। तो डेल्टा पी कितना आ गया 1 बार। 1 बार कितना होता है 10⁵ पास्कल। तो पीडीवी कैसे निकालेंगे, पी तो हमारे पास लगा है 10⁵ पास्कल इंटू डीवी। डीवी कितना है एरिया इंटू वॉल्यूम स्वेप्ट, एरिया इंटू वॉल्यूम स्वेप्ट, इट इज गिवन 10 सेंटीमीटर, कन्वर्ट दैट इनटू मीटर। तो इतना वॉल्यूम स्वेप्ट हुआ, प्रेशर डेल्टा पी इज दिस। तो दिस इज द वर्क विच वी आर कैलकुलेटिंग, राइट। सो कंसेप्ट इसमें क्या था, कंसेप्ट था कि जब पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम आप पिस्टन पे निकालो तो प्रेशर कौन से वाला लेना है, प्रेशर इज टू बी टेकन द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर, दैट मींस द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द पिस्टन साइड एंड क्रैंक साइड। पिस्टन साइड पे प्रेशर कितना है 2 बार, क्रैंक साइड पे प्रेशर कितना है 1 बार। वेदर दीज टू प्रेशर्स आर गिवन इन गेज और दे आर गिवन इन एब्सोल्यूट, all you have to calculate is difference of the pressure, because difference of the pressure is the net pressure which will act on the piston and the piston will slide. तो डेल्टा पी लो और उसको डेल्टा वी से मल्टीप्लाई करो, that is the concept used in this particular case, right? This is how we calculate it. Okay, now see this diagram. आपको उसने 4 डिवाइस दिए हैं, आइस इंजन, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, टरबाइन, पंप, और ये पूछ रहा है कि बताओ किसमें कौन सा वर्क यूज हुआ। Okay, now let me tell you, this is basically question based upon PDV and VDP work. आप जानते हैं हमारे पास दो टाइप के वर्क होते हैं, एक PDV वर्क होता है। PDV वर्क आप निकालते हैं ऑन V एक्सिस, और माइनस VDP वर्क आप निकालते हैं, दिस इज माइनस VDP वर्क, स्टडी फ्लो वर्क, दिस इज PDV वर्क, डिस्प्लेसमेंट वर्क, राइट। PDV work is calculated in the closed system and minus VDP work is calculated in the open or flow system. So this is the closed system work, the flow system work. अब इन चारों डिवाइसेस में इंटरनल कंबशन इंजन वो जो वर्क प्रोड्यूस करता है डिवाइस, इट इज द वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, सो इट गिव्स यू पॉजिटिव वर्क, दैट इज एक्सपेंशन वर्क, एंड इट इज अ क्लोज्ड work it is given. IC engine is not a closed system, but when it gives you work, all the valves are closed and hence the work obtained is closed system work. Reversible work and closed system work मिलता है, तो ये IC engine है, right? अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, that means इसका इस डायरेक्शन में कंप्रेशन कर दूं, ये तो एक्सपेंशन है, कंप्रेशन कर दूं तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर बन जाएगा जो क्लोज सिस्टम है। तो आई गेट पीडीवी वर्क इन दीज टू एंड आई गेट वीडीपी वर्क इन दीज टू। जब मैं बोलता हूं कि कंप्रेसर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर नहीं है, पंप है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप की मैं बात कर सकता हूं, राइट। तो इसमें आइसी इंजन इज, दिस वन इज आइसी इंजन, नाउ दिस वन इज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, turbine because turbine gives you work, turbine is a work producing device, pump is the work consuming device, but both are steady flow work, दोनों में स्टडी फ्लो या माइनस वीडीपी वर्क होगा। तो दिस इज पंप, दिस इज टर्बाइन। नो यू कैन हिट द आंसर। ए इज बेसिकली आइसी इंजन इज पी, ए इज पी, एंड बी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, बी इज बेसिकली एस, सो ए इज बी, तो आंसर फॉर दिस विल बी डी। तो दिस क्वेश्चन वाज पीडीवी वर्क माइनस वीडीपी वर्क। पीडीवी वर्क क्लोज सिस्टम में होता है, आइसी इंजन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आर दिस, इंजन्स आर ऑलवेज एक्सपेंशन, सो दे गिव यू वर्क। तो इंजन आपका एक्सपेंशन होगा, कंप्रेशर आपका कंप्रेशन होगा, टर्बाइन आपका एक्सपेंशन होगा। सो दिस इज द कंसेप्ट बेस्ड अपॉन दैट ओनली, राइट। Okay, so let's go for next question now. What will be the angle theta if reversible adiabatic process is drawn on log P and log V axis? Okay, let me explain the concept here now. मैंने आपको बताया कि any process is plotted as PV raised to power n is equal to constant. Now let's take log on both sides. Log of P plus n log of V is equal to log of C, right? Now let me calculate what is the slope of log P log V diagram. अगर ये y हो, अगर ये x हो, तो स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप इज dp by dv, राइट। लेकिन अगर ये आपका log P log V है,
So I'll say difference of log of P over difference of log of V is the slope of log V diagram. Fine. Now let's see this side. This is constant, that means log of P1 plus n log of V1 is equal to log of P2 plus n log of V2. Now let's see. Log of P1 minus log of P2 is equal to n times log of V2 minus log of V1. Can I write it like this? So n क्या हो गया? Log of P1 minus log of P2 over log of V2 minus log of V1. Or I can say log of P1. Let's see this way only. n की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? And n for PV raised to power n is calculated like this, and for PV raised to power gamma, n की जगह gamma लिख दो, तो we can write it as gamma also. That will be gamma for PV raised to power n is equal to constant. अब let us say this point is point 1 and this point is point number 2. So tangent theta, when I calculate tangent theta, you see tangent theta will be dy over dx. This is dy, this is dx, and this is nothing but tangent theta only. Difference log of p1, this is log of p1, this is log of p2. Log of p1 minus log of p2 is nothing but dy. Log of v2 minus log of v1 is nothing but dx. So tangent theta is dy over dx, and that further is equal to nothing but gamma. We have calculated that n or gamma is coming like this. Instead of using PV raised to n is equal to constant, I could have used PV raised to gamma is equal to constant. That give me same answer. So that simply means that log P log V diagram के ऊपर the slope of this line that is tangent theta is nothing but gamma. Now gamma उसने आपको कितना दे रखा है? Gamma is basically reversible adiabatic process, and we want to find out theta, and gamma की value if for air we take for air, what is the value of gamma for air? Gamma for air is 1.4. So tangent theta is 1.4. So theta की value is something which we have to calculate. So if tangent theta is 1.4, what is the value of theta? So this is what we have already calculated. So we have calculated that this is nothing but slope. Tangent theta is 1.4. So what is the value of theta? That is 54.46. So always remember that this log P log V diagram अगर मैं plot करूं, तो slope of log P log V diagram is nothing but that is the value of n, or that is gamma. You understand? So concept is that tangent of theta is equal to n in PV raised to power n is equal to constant process for log of P log of V diagram. So log of P log of V diagram अगर हमें दिया है, so this is how we calculate it. Let's go for this question now. There are two containers of equal volume contain air at different pressure and temperature as shown. The ratio of number of molecule of air in container A and container B is to be calculated. So what is same? Volume is same और दोनों में air है. Volume is same and दोनों में air है. So you have to find out the ratio of number of molecules, right? So you know ideal gas equation, because air is ideal gas. So PV is equal to nRT. N is the number of mole. So N is PV over R bar T. अब क्या है हमारे पास? Let's say this is container number 2, this is container number 1. So number of moles in 2, number of moles in 1, let us say is P2 V2 over RT2 over P1 V1 over RT1. अब क्या है? V1 V2 तो बराबर है, तो कितना आ जाएगा? P2 by P1, R बार भी कैंसिल हो गया, T1 by T2. अब देखते हैं क्या है ये. P2 कितना दे रखा है? 2P, और P1 कितना दे रखा है? P, और T1 कितना दे रखा है? T, और ये क्या दे रखा है? 4T. तो if I divide it, it comes out to be 1 by 2. तो number of moles, okay, ratio of number of molecules of air in container A. Container A को हमने 1 बोल दिया, तो is asking you N1 by N2. N1 by N2 is nothing but 2. And you know number of molecules, Avogadro number into number of molecules. So number of molecules is nothing but number of moles into Avogadro number. So number of moles in 1 over number of moles in 2 will be equal to number of N1 by N2. Avogadro number आपका divide हो जाएगा,
Avogadro number is a constant number. So if you tell me the number of moles of a gas, I can tell you the number of molecules in the number of moles, because that is multiplied to be Avogadro number, 6.023 into 10 to the 23. That is the Avogadro number. So number of moles ki ratio, number of molecules ki ratio is same. So N1 by N2, number of molecules in A, number of molecules in B is equal to 2. Let's see whether we have hit the right answer or not. Yes, the answer is 2. PV is equal to nRT, तो N is PV और RT, तो हमने क्या निकाला, NaNV is 2 and A is the Avogadro number. So this Avogadro number is a very big number, 6.02 into 10 raised to power 23. 1 mole of any ideal gas contains this many number of molecules. That is the meaning of this particular thing. So I hope this is clear to us. Last question is this. He has given you some equation PV raised to n is equal to constant. You are to find out value of n. It's very simple. Just now we explained. आप इसमें logarithmic value लो. So हमने बोला था PV raised to power n is equal to constant. Log ले लो. Log of P plus n log of V is equal to log of constant. From here I can calculate now. Log of P1 plus n log of V1 is equal to log of P2 plus n log of V2, and value of n will be log of P1 minus log of P2 over log of V2 minus log of V1. So n is equal to log of P1 by P2 over log of V2 by V1. That is how we calculate value of small n. Log of P1 by P2. So P1, P2 is given to us. What is P1 by P2 is 4. That n will be log of 4 over V2 by V1, 3. Log of 3. So log of 4 over log of 3 is the answer. So we are to solve it and we will find the answer. Right? This is the answer for that. So I hope this concept is clear to us now, whatever we discussed in this particular topic. So I discussed with the PV diagram के ऊपर T isothermal and reversible adiabatic process कैसे draw करनी है, TS diagram के ऊपर isochoric isobaric process कैसे draw करनी है, and ideal gas equation we saw, and how to find out slope of PV diagram, TS diagram, and how to find out the value of n polytropic index. And these small concepts are very important. So little bit we discussed about PDV and VDP processes. PDV VDP processes closed system open system के लिए होती हैं. That concept also we discussed. You see, you need to have knowledge of these all the things, but through questions you can get some kind of concepts clear. Fine. So just keep revising. This was the first lecture of thermodynamics. We'll keep on going for some more many questions on these subjects. Thank you.